Welcome back to English class once again. Hello students of class 12th. आज हम 12वीं कक्षा की फ्लेमिंगो बुक का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका टाइटल है गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज रिटन बाय A.R. Barton. I have categorized this story into the two parts. The author focused on the two things: first, themes, and second, characters. First of all, we want to discuss about the themes. The first theme is adolescence fantasy. Adolescent means teenagers. Adolescence means teenagers, youngsters like you. Fantasy means imagination. The youngsters imagines various things. The main character Sophie. Sophie imagines to open a boutique. Sophie fantasizes to become an actress, a designer, and a bank manager. So all the youngsters think like Sophie. Second, hero worship. Hero worship means the heroes, sports stars, celebrities of film industry, celebrities of politics, celebrity of the sports. All the youngsters believe in them. फॉर एग्जाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स अमेजन के ऊपर आप मूवी देखते हैं तो आप जिस हीरो हीरोइन बहुत अच्छा लगता है आप उसकी तरह सोचना शुरू कर देते हैं, उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हीरो वर्शिप। बिकॉज ऑल द स्पोर्ट्स स्टार्स, ऑल द फिल्म इंडस्ट्रीज, एक्टर एक्ट्रेसेस आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगस्टर्स. They motivate and they follow them. They follow on their footsteps. They think like them. थर्ड, बिल्ड कैसल्स इन द एयर. कई बार जिंदगी में यंगस्टर्स होते हैं हवाई किले बनाते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन उनकी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस नॉट लाइक दैट. तो ऐसे ही कैरेक्टर की बात हम इस स्टोरी में करने जा रहे हैं. सबसे मेन कैरेक्टर है सोफी, यानी कि सोफी. सोफी इज ए प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर. द होल स्टोरी मूव्स अराउंड सोफी. सोफी इज ए स्कूल गोइंग गर्ल and she believes in unrealistic or impractical things. She wants to escape from the reality of the life. Her socio-economic status is very poor, but she imagines, she is a daydreamer. She imagines and fantasizes to become a fashion designer and actress, and even she wants to open a boutique. Boutique होता है a shop of the fashionable things. Dear students, her aspirations, her desires, ambitions, and the dreams are the product of her mind, are the product of her imagination, are the product of her fantasy. They are not matching with the reality. Second, यानी कि अपनी फैंटेसी में, इवन अपनी फैंटेसी में सी इमेजिन्स ए मीटिंग विद डैनी कैसी. डैनी कैसी कौन है? एक इरिश फुटबॉलर है, एक सेलिब्रिटी है जो यूनाइटेड क्लब के लिए खेलता है. यानी कि ही इज द ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड प्रोडिजी. टैलेंट, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही यंग है, और ऑल द यंगस्टर्स आर फैन ऑफ डैनी कैसी. तो डैनी कैसी एक उभरता हुआ स्पोर्ट्स स्टार है फुटबॉल का. तो सी इमेजिन्स ए मीटिंग एंड सी इमेजिन्स इवन डेटिंग विद डैनी कैसी. She shares all the secrets of the meeting with Danny Casey with her brother Geoff. यानी कि ये भी उसकी फैंटेसी है, ये भी एक उसकी इमेजिनेशन है. तो जियोफ कौन है? जियोफ इज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी. सोफी के एल्डर ब्रदर हैं. ही इज ए रिजर्व माइंडेड, ही इज ए शाई पर्सन, ही इज असिस्टेंट मैकेनिक, अप्रेंटिस कह सकते हैं, मोटर मैकेनिक. Or he is out of the school since 3 years because of the poverty. He is not capable to continue the education. Or Geoff represents youth and Danny Casey represents youth, and Sophie talks, fantasizes and imagines with them. She imagines that her brother Geoff visits various exotic and wonderful places, going places, just like shopping centers, shopping malls, clubs, etc.
but he does not want to share with Sophie. She thinks, she imagines, she desires to share all the things with Mother regarding the exotic and wonderful places and the things. That's why the first of all, she shared the secrets of meeting and dating with Danny Casey to Geoff. अब Jansi is a classmate, schoolmate of Sophie. She believes in reality. She rejects imaginations. She knows about her status of the family. She knows about her capacity of working in a biscuit factory. Even she discourages her about fantasy and imagination and daydreams. Jansi's thinking and Sophie's thinking are totally different. Both are classmates, both belong to the same school, same society, same socio-economic status. बट ये प्रैक्टिकल है, रियल है जानसी. अगला कैरेक्टर जानसी है. तो स्टूडेंट्स, एक कैरेक्टर्स को मेनली डिस्कस किया, एक थीम को डिस्कस किया. तीसरी बात, एक मैसेज. द स्टोरी गिव्स ए मैसेज टू द यंगस्टर्स, टीनेजर्स, एडोलसेंट्स कि all the dreams and aspirations and desires and disappointments are the product of the mind, her mind, Sophie's mind. यानी कि we should not fantasize the things, we should not imagine the things which are unrealistic, which are impractical. We must have to make a plan, we must have a patience, we have to work hard to fulfill the dreams. सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है. Even teachers also encourage the students to have the dreams, but we have to make a plan. We have to work hard. We have to have a patience and tolerance power. We must have a positive thinking. On the basis of these things, we can complete our dreams. Otherwise, just like Sophie, our dreams, ambitions, aspirations, desires will be failure, and they lead to disappointments and the frustrations in the life. Thank you, students. I hope that you have understood this chapter carefully.